दिस एग्जाम ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ साइंस सब्जेक्ट। ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है सभी कौन से है, साइंस के हैं। एंड ऑल आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, सभी कैसे है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आर एबल टू सी द स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके, so you have joined the workshop to know more about Dr. Homi Baba Young Scientist exam. So this exam is conducted since 1981 by the Greater Mumbai Science Teacher Association. ये एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? मुंबई साइंस टीचर एसोसिएशन since 1981, and the main aim of this exam is to develop the curiosity in the student about the science subject, to develop the problem solving skill, to develop the observation skill, to develop the motor skill, and then next one, that is to develop the scientific attitude. Okay, ये इस एग्जाम का मेन एम है। ये जो डॉक्टर होमी बाबा यंग साइंटिस्ट एग्जाम है, दिस एग्जाम इज फॉर द स्टूडेंट ऑफ 6th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड। कौन से स्टूडेंट के लिए है? 6th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड के। इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, सेमी मीडियम, ऑल स्टूडेंट्स कैन गिव दिस एग्जाम। सभी बोर्ड के, महाराष्ट्र बोर्ड के, देन मराठी मीडियम वाले, सेमी मीडियम, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अदर बोर्ड्स वाले भी ये एग्जाम दे सकते हैं। ओके, एग्जाम महाराष्ट्र में भी कंडक्ट होती है, महाराष्ट्र के बाहर भी ये एग्जाम होती है। इन दिस एग्जाम देयर आर टोटल 3 राउंड। फर्स्ट राउंड इज थ्योरी कंपटीशन, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। 100 मार्क्स के लिए एग्जाम होती है। एग्जाम इज इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। एग्जाम कब होती है? अक्टूबर के लास्ट वीक में। देन जो थेरी एग्जाम है उसमें से 7.5% स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी में होती है। देन नेक्स्ट वन, स्टूडेंट हैव टू मेक स्मॉल प्रोजेक्ट एंड इंटरव्यू। प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, स्टूडेंट्स को इंटरव्यू देनी पड़ती है, जो कि मार्च में होता है। एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल there is a prize distribution, gold medal, silver medal, bronze medal, 3000 स्कॉलरशिप, 2000 स्कॉलरशिप, 1000 स्कॉलरशिप। स्टूडेंट के जितना स्कोर है, जितने मार्क्स है, एज पर दैट स्कॉलरशिप मिलती है। सो पहला राउंड होता है दैट इज थ्योरी एग्जाम, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जो कि साइंस सब्जेक्ट के बेस है। 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स है, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस इन 90 मिनट्स। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स है, एंड आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करना है। एंड एग्जाम रहती है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ओके, एग्जाम कब होती है? दैट इज द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में ये एग्जाम रहती है। Dear students, have you given Nauda and scholarship exam? Yes, type the message in chat box. आपने नवोदय स्कॉलरशिप एग्जाम दी है? उसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना? चैतन्य हैव गिवन द मैसेज दैट इज यस। यस, यहाँ पे किसने किसने नवोदय स्कॉलरशिप एग्जाम दी है? ओके, अनु पाटिल गिवन। ओके, तो नवोदय स्कॉलरशिप के क्वेश्चंस आपने देखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सो लाइक दिस, वैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बट क्वेश्चंस आर ऑफ साइंस सब्जेक्ट। क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट के होते हैं? दैट इज साइंस सब्जेक्ट के होते हैं। ओके, एंड अक्टूबर के लास्ट वीक में एग्जाम होने वाली है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? इफ आ गया होगा देन शो मी योर थंब, और यू कैन टाइप द मैसेज दैट इज द यस। ओके, आपको समझ में आ गया? ओके, सो टुडे आई एम टेकिंग द डेमो लेक्चर फॉर द चैप्टर नंबर 1, दैट इज फूड एंड इट्स सोर्सेस।
ओके, एंड लास्ट 10 मिनट्स में आपको आपके पेरेंट्स को भी ज्वाइन करने को बोलना है. ओके, नाउ यू कैन ज्वाइन द क्लास. इफ योर पेरेंट इज अलोंग विथ यू, नो प्रॉब्लम, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अलोंग विथ यू. ओके, बट लास्ट 10 मिनट्स में आपके पेरेंट्स से मुझे बात करना है कंपल्सरी. ओके, लास्ट 10 मिनट्स में आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स को भी ज्वाइन करने को बोलना है. क्लियर? इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन योर वीडियो, इट्स गुड फॉर यू एंड मी आल्सो. Okay, compulsory on your video, so it will be easy for you and me both also. So आप एग्जाम मराठी मीडियम में भी दे सकते हैं, एंड नेक्स्ट वन पेपर दो ही लैंग्वेज में होता है, या तो मराठी मीडियम या तो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम. ओके, जो मराठी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर मराठी मीडियम में होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं सीबीएसई वाले हैं उनका पेपर इंग्लिश में होता है. Clear? So now I am going to start first chapter. Okay? आज मैं आपको एक डेमो लेक्चर देने वाली हूँ जो कि फर्स्ट चैप्टर का है. ओके, चैप्टर नंबर 1. Okay, so as I have already told you, my name is Rajmati Thain. I am taking the science classes, especially 6th standard and 9th standard की जो होमी बाबा एग्जाम है उसके मैं क्लासेस देती हूँ. होमी बाबा एग्जाम में 4 स्टेजेस होते हैं, एक्चुअली 3 है, इन प्रोजेक्ट एंड इंटरव्यू कंबाइन है. फर्स्ट स्टेज थ्योरी एग्जाम होती है, सेकेंड स्टेज प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, थर्ड स्टेज आपको घर पे ही प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट आपको लिखना होता है, एंड आफ्टर दैट मुंबई को इंटरव्यू होता है. ओके, जो पहला राउंड है थ्योरी राउंड, जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, जनरली डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे होता है. ओके, आप डिस्ट्रिक्ट प्लेस में रहते होंगे तो वहीं पे आपकी एग्जाम होगी. प्रैक्टिकल एग्जाम रीजन में होती है, मुंबई रीजन, देन विदर्भ रीजन, देन ठाणे रीजन, नवी मुंबई रीजन, कोल्हापुर रीजन, वहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम होती है. प्रैक्टिकल को आपको वहां पे जाना होता है. इवन थ्योरी एग्जाम इज ऑल्सो ऑफलाइन. ओके, जैसे अपने नवोदय स्कॉलरशिप की दी है ना, वैसे थ्योरी एग्जाम भी ऑफलाइन होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी ऑफलाइन होती है, प्रोजेक्ट आपको घर पे ही लिखना है, इंटरव्यू भी ऑफलाइन होता है, आपको मुंबई को जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए. बट स्टेप बाय स्टेप आर यू सिलेक्टेड. ओके, थ्योरी को सबको 60-70,000 स्टूडेंट बैठते हैं, तो उसमें से सिर्फ 8% स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं. ओके, सपोज 100 है तो 100 में से 80 स्टूडेंट प्रैक्टिकल को जाएंगे. 8 में से अगेन सिर्फ 1 स्टूडेंट सिलेक्ट होगा कि जो प्रोजेक्ट और इंटरव्यू को जाता है. बैठे कितने हैं? 100. उसमें से सिलेक्ट कितने किए प्रैक्टिकल के लिए? 8. 8 में से प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू के लिए कितना सिलेक्ट किया? 1. ओके, ऐसा ये एग्जाम का पैटर्न होता है. So today I'm taking the demo lecture of the chapter number 1, that is food and its sources. Okay, आज मैं आपके चैप्टर नंबर 1 का डेमो क्लास देने वाली हूँ, that is food and its sources. Okay, so why we are eating the food? Can anyone tell me? Type the message. Why we are eating the food? Food is necessary. Okay, so food is the basic need of all living organism. Food is essential for all living organism. So why we need the food? Yes, type the message. Okay, अब सब लोग फूड खाते हैं? सब लोग फूड खाते हैं? यस ना, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं. अब सब लोग फूड खाते हैं? जस्ट शो मी योर थंब. ओके, सब लोग फूड खाते हैं ना. सो फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक है, किसे हमें लिविंग बोलना है? सो दोज हु आर टेकिंग द फूड, दे आर कॉल्ड लिविंग. जो लोग फूड लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिविंग.
ओके, फॉर एग्जाम्पल नॉन लिविंग थिंग, यहाँ पे सीजर है, सीजर क्या है, नॉन लिविंग है, सीजर फूड लेती है, इट नीड द फूड, नो, सो लिविंग थिंग नीड द फूड, जो लिविंग थिंग है, okay, they need the food. Food is the basic need of all living organism. It is essential for all living organism. So why we are eating the food? क्या मिलता है हमें फूड में से? So food gives us the energy. Okay, to do different activity. मुझे रनिंग करना है, मुझे वॉकिंग करना है, मुझे रीडिंग करना है, हमें जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, सभी एक्टिविटी के लिए हमें क्या लगता है, फूड लगता है. सो फूड गिव्स अस द एनर्जी. Food is important for the growth. Food is also important for the development of our body. Food is also important to maintain the function of body and organ. And to make the food tasty, we are using the different ingredient and for the different variety of food. So ingredient क्या है? The chemical substance which are present in the food, that is called nutrients. Okay, food में जो chemical substance present है, अनुज पाटिल, don't write down. Okay, don't write down. The chemical substance which are present in the food, they are called nutrients. So food में कौन कौन से nutrient होते हैं? There are 5 major nutrients in our food: carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. Those are the nutrients. And the different ingredient for the different variety of the food. So ingredient are the substance. Okay, ingredient is the part of the substance or the part of the dish. Okay, ingredient क्या है? Substance है जो कि हम डिश बनाने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे बिरयानी बनानी है, सो आई नीड द राइस, आई नीड द वेजिटेबल्स, आई नीड द ऑयल, आई नीड द स्पाइसेस. तो ये क्या हो गए? इंग्रेडिएंट. एंड ये इंग्रेडिएंट से क्या बनने वाला है? दैट इज द बिरयानी, पुलावा, वेजिटेबल पुलावा. सपोज मुझे वेजिटेबल पुलावा बनाना है, वेजिटेबल पुलाव क्या हो गया? एक डिश हो गई. यस ना, ये क्या हो गई? एक डिश हो गई. सो ये डिश बनाने के लिए मुझे कुछ सब्सटेंस लगने वाले हैं, सो दे आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट. ओके, इंग्रेडिएंट आर द सब्सटेंस which we are used to making the different type of dishes or different type of food item. इंग्रेडिएंट क्या है? इंग्रेडिएंट सब्सटेंस है जो कि हम यूज करने वाले हैं टू मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस. ओके, सो ये जो इंग्रेडिएंट है और द फूड आइटम विच वी ईट, हम जो फूड आइटम खाते हैं वो हमें कौन से 2 सोर्सेस से मिलते हैं? दैट इज द प्लांट सोर्स एंड नेक्स्ट वन एनिमल सोर्स. ओके, देखो हम जो फूड आइटम खाते हैं, आपके किचन का ऑब्जर्व करो और आपका टिफिन ऑब्जर्व करो, आपका जो डाइट है, सभी आप जो खाना खाते हैं, प्लेट ऑब्जर्व करो. So the food item which we obtain from the 2 main sources, that is the plant source and next one animal source. So food comprises of ingredient, and ingredient is a part of mixture that are used to make the dish. An ingredient can be obtained from the plant or animal. In short, हम ऐसा बोल सकते हैं, food is obtained from the plant and animal. The main source of the food, हम जो फूड खाते हैं, ओके, हमें कौन से 2 सोर्स से मिलता है? दैट इज द प्लांट एंड एनिमल. सो प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट. प्लांट से हमें ग्रेन्स मिलते हैं, सीरियल मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं. देन एनिमल, एनिमल इज ऑल्सो अनदर सोर्स ऑफ फूड.
ओके, एनिमल से भी हमें फूड मिलता है, मिल्क है, मीट है, फिश है, एग है। ओके, सो प्लांट्स एंड एनिमल are the two main sources of the food. Understand my point? Is it okay, my point? If okay, then show your thumb. Okay, or you can type the message in chat box. So, sources of food. How many sources of food? There are two sources of food. That is plant source and next one animal source. Clear, my dear students? Okay. Now, प्लांट्स प्लांट से हमें डिफरेंट फूड आइटम मिलते हैं. सो प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स required to keep the human body in the perfect working condition. So we obtain the food from the plants directly or indirectly. हमें प्लांट से फूड मिलता है, बट ये जो प्लांट से खुद प्लांट से उसको कैसे फूड बनता है मिलता है. सो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. क्या डिफरेंस है? ओके, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड वी आर नॉट मेकिंग आवर फूड. वी आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल. ओके, क्या डिफरेंस है? हम हम हमारा फूड खुद बनाते हैं? नो, किचन में बनाते होंगे, बट उसके लिए जो इंग्रेडिएंट लगता है वो हमें प्लांट तो एनिमल से मिलता है. बट प्लांट मेक देयर ओन फूड. प्लांट क्या करते हैं? खुद का फूड खुद बनाते हैं. ओके, एंड एनिमल्स क्या करते हैं? इट इज डिपेंड ऑन द प्लांट्स. ओके, और इट इज डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स. So first of all, plants are called autotroph. Autotroph means, auto means self and troph means to feed. जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, they are called autotrophs. So green plants make their own food by the process, and that process is called photosynthesis. And green plants are called autotrophs. Okay, autotroph means those organisms who make their own food. जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, they are called autotrophs. So green plants are called autotroph because they make their own food by using कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, then by using water, by using sunlight and by using the chlorophyll. So by using these four things, okay, by using these four things, which are that four things? Carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Chlorophyll means it is a green color pigment which is present in the leaf, and because of chlorophyll leaf are green. ओके, लीफ ग्रीन है. व्हाई? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एंड क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट. सो बाय यूजिंग दिस फोर थिंग्स, मे आई रिपीट एट. फर्स्ट वन, कार्बन डाइऑक्साइड, water, sunlight, chlorophyll. By using these four things, green plants make their own food, and that process is called photosynthesis. And green plants are called autotrophs, or green plants are also called producers because they make their own food. ओके, ग्रीन प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स है. ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. ग्रीन प्लांट्स को और क्या बोलते हैं? producers, because they produce, they make their own food, and green plants make their own food by the process, and that process is called photosynthesis. And plant में कौन सा part food बनाता है? Can anyone type the message?
कौन से पार्ट में फूड बनता है प्लांट्स में? यस, टाइप द मैसेज। लीफ। ओके, प्लांट में फूड बनाने का काम कौन करता है? लीफ। फूड किस में बनता है? लीफ में बनता है। सो लीफ इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री। Okay, leaf is called food factory and leaf is also called kitchen of the plants. Plants का kitchen क्या है? Leaf. किसमें food बनता है? Leaf में. So leaf is called kitchen of the plant और leaf is also called food factory. Okay, कौन से part में food बनता है? Leaf में बनता है. So is it okay, my dear students? यहाँ तक समझ में आ गया? So may I repeat again? I have started chapter number 1, that is food and its sources, or where does it comes from? Okay, ये chapter मैंने start किया है. Food is the basic need of all living thing. It is essential. Okay, then food gives us the energy to do the different activity. Food is important for the growth, development, for proper functioning of the body. Food is important. So we are eating the different type of dishes. Dish बनाने के लिए हमें क्या लगता है? Ingredients. So ingredients are the substance which make the dish, and ingredients are obtained from the plants and animal. हमें फूड किससे मिलते हैं? प्लांट से भी मिलते हैं, फूड हमें एनिमल से भी मिलता है. ओके, सो plants are called autotroph because it make their own food by the process that is called photosynthesis. एंड प्लांट्स में फूड कौन बनाता है? लीफ. कौन से पार्ट में फूड बनता है? लीफ. लीफ इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट्स. सो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज, हम प्लांट्स के लीव्स भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, रूट से भी हमें फूड मिलता है, फ्रूट से भी मिलता है, सीड से भी मिलता है. So plants के all parts we are using as the food. So before that you should know the parts of the plants. I think सबको पता होंगे. Yes ना, plants के कौन कौन से part है? So first one, plants having the root, plant having the stem, plant having the leaves, plant having the flower, then plant having the fruit, and then seed. These are the 6 main part of the plants. Plants के कौन-कौन से 6 main part है? Root, stem, leaves, flower, fruit, and seed. Okay, dear students. Okay, how many main parts of the plants? Plants having 6 main parts. Now, we are obtaining the food from the different part of the plants. So, food from the roots. Okay, so plants का कौन सा part है? Root है. Okay, and the plants such as carrot, radish, turnip, beetroot, then sweet potato. Okay, they store the food. उनका food stored होता है in the roots, and these roots are rich in starch. Okay, these roots are rich in starch and are called modified root. Okay, so those are the root and which we are using as the food. Plant का कौन सा part है? Root है, and we are eating as a food, and those are called modified root. उसको क्या बोलते हैं? Modified root, and it stored the starch. इसमें starch store होता है. So those are the roots which we eat as a raw or cook. Actually plant का कौन सा part है? Root है, उसको हम खाते हैं एज अ रॉ, हम खाते हैं, और एज अ कुक उसको कुक करके भी हम खाते हैं. सो एग्जाम्पल्स आर कैरोट है, रेडिश है, टर्निप है,
बीट रूट है. दस आर द रूट्स. प्लांट्स का कौन सा पार्ट है? रूट. एंड विच वी आर यूजिंग एज द फूड, एंड उसको बोलते हैं मॉडिफाइड रूट. ओके, अंडरस्टैंड अबाउट द रूट. Okay, now next one, stem. Okay, so stem of many plants. Okay, stem of many plants we are eat as a food. Actually, plant का कौन सा part है? Stem है. Okay, so stem of many plants are eaten as the food. For example, potato, then turmeric, then onion, garlic, ginger, then a sugar cane. Okay, so these stem are found below the soil. So those are called underground stem. ये जो stem है below the soil मिलते हैं, and those are called underground stem. Okay, below the soil hai, and they are called underground stem. So we eat the stem of the plant such as sugarcane, then next one that is potato, then turmeric, onion, garlic, ginger. Okay, those are the underground stem. प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टेम है, एंड उसको हम खाते हैं एज अ food. Okay, understand? Potato, then onion, then garlic, then ginger, then turmeric, then sugar cane. Those are the stem. Okay, and they are called underground stem. इसमें से कोई जो है some है, that is potato है, then turmeric है, onion है, ginger है, garlic है. Those are grown below the soil, so they are called underground stem. Sugarcane above the soil होता है. Yes, sugarcane is above the soil, and some are grown below the soil. They are called underground stem. Okay, प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टेम. ओके, प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टेम, विच वी आर यूज एज अ फूड, जो कि हम एज अ फूड खाते हैं. सो रूट, यस. ओके, प्लांट्स का रूट पार्ट है जो कि हम खाते हैं. यस, कैरोट है, रेडिश है, टर्निप है, बीट रूट है, स्वीट पोटैटो है. देन नेक्स्ट वन, स्टेम. यस, वी आर ईटिंग द stem also. Now next one, next part of the plant, that is the leaves. Actually plant का कौन सा part है? Leaves है, and we are eating as a food, जिसको हम as a food खाते हैं. So many green leaves are the rich source of calcium. So spinach, स्पिनच एक्चुअली कौन सा पार्ट है प्लांट का? लीव्स. लेट्यूस कौन सा पार्ट है? लीव्स. कोरिएंडर, ओके, विच वी आर यूजिंग फॉर गार्निशिंग, लीव्स है. मिंट, लीव्स है. ओके, देन स्पिनच, लीव्स है. देन फेनिग्रीक, फेन्यूग्रीक उसके भी हम लीव्स खाते हैं. सो दिस मीन पुदीना, which we are using to make the chutney, and it is the herbaceous plants with having the medicinal property also. Even leaves of tulsi, which are also we are using. Okay, हम टी में ऐड करते हैं. ओके, देन जो हम काढ़ा बनाते हैं उसमें ऐड करते हैं. सो ये प्लांट के कौन से पार्ट है? लीव्स है. Okay, so many green leaves we are using as a food. Plant का कौन सा part है? Leaves है, but it is the source of food. Okay, हम use करते हैं as a food. Example is cabbage, lettuce, then spinach, fenugreek, even mustard leaves. ओके, उसकी भी वेजिटेबल बनाते हैं मस्टर्ड लीव्स की. सम जगह पे ड्रम स्टिक
ड्रम स्टिक के यूज के भी वेजिटेबल्स बनाते हैं. देन कोरिएंडर, मीन, द लीव्स आर आल्सो यूज. ओके. देन नेक्स्ट वन रेडिश. रेडिश को जो यूज होते हैं उसके भी यूज खाते हैं कोई कोई लोग एज अ फूड, एज अ वेजिटेबल. Then next one, food from the flower. Okay, एक्चुअली प्लांट्स का कौन सा पार्ट है? फ्लावर है. ओके, प्लांट का कौन सा पार्ट है? दैट इज द फ्लावर है. ओके, सो फ्लावर ऑफ द सर्टन प्लांट सच एज कॉलीफ्लावर. देन नेक्स्ट वन बनाना फ्लावर भी खाते हैं एज अ वेजिटेबल. देन पंकिन फ्लावर, देन ब्रोकोली फ्लावर. Okay, so those are the flowers. Flower of some plants such as cauliflower, broccoli, banana flower, pumpkin flower. Those are the flower. Plants का कौन सा part है? Flower है. And which we eat as a vegetable. Okay, or as a food. हम as a food खाते हैं. And plants का उसकी जो प्लांट्स है उसका वो कौन सा पार्ट है? दैट इज द फ्लावर. देन नेक्स्ट वन, फ्रूट्स. We get the edible fruits from many plants, and fruits are rich in vitamin, minerals. Okay, fruits के भी टू टाइप होते हैं, fleshy fruits, dry fruits. So mango, guava, orange, apple, pear, grapes, banana. Okay, sweet lime. So many. Okay, and so many examples. So fruits. Okay, we are eating the part of the plant, that is the fruit. Plant का कौन सा part है? Fruit है, and which we are used as a food. Okay, हम उसको as a food खाते हैं. Then next part of the plant, that is the seed. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट कौन सा है? सीड. इसके पहले देखो मैंने आपको प्लांट्स के 6 पार्ट बताए थे. ओके, रूट, stem, leaves, flower, fruit, and next one, seed. So roots, yes. Okay, then next one, stem, as a food खाते हैं, yes. Leaves, yes. Flower, yes. Fruit, yes. Then next one, seed. Plant का कौन सा part है? That is the seeds. So seed are edible. Edible means जिसको हम खा सकते हैं. Okay, that is called edible. And non-edible means जिसको हम खा नहीं सकते, that is called non-edible. So seed which are edible can be used as a grain, as a pulses, as a oil seed. Oil seed means जिसमें से हमें oil मिलता है. जो सीड से हमें ऑयल मिलता है, दे आर कॉल्ड ऑयल सीड. ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट, यस, हमें ऑयल मिलता है. सीसम, तिल, यस, हमें ऑयल मिलता है. मस्टर्ड, यस, हमें ऑयल मिलता है. कोकोनट, ऑयल मिलता है. सनफ्लावर, ऑयल मिलता है. सोयाबीन की सीड, ऑयल मिलता है. आलमंड सीड, ऑयल मिलता है. So those are the actually seeds. Okay, so seeds are edible and we are eating as a grains, as a pulses, as a oil seed. Okay, some seeds we are using as a spices. Okay, कोई seeds हम as a spices खाते हैं. Now seeds, ओके, प्लांट्स का पार्ट है सीड. ओके, सीड से हमें सीरल एंड पल्सेस मिलते हैं. सो सीरल, सीरल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. हम जो भाकरी खाते हैं, चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, ओके, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सीरल. एंड सीरल आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके, सीरियल में क्या वो कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है? दैट इज द कार्बोहाइड्रेट.
They are most important source of food for the man and animal, and they are the rich source of carbohydrate. Okay, for example, wheat है, राइस है, जवार है, बाजरा है, कॉर्न है, मेज है, ओट्स है, देन नाचनी, नागली, रागी है. ओके, दज आर द सीरियल्स. ये सब क्या हो गए? सीरियल्स. ओके, एंड सीरियल एक्चुअली प्लांट का कौन सा पार्ट है? सीड. सीड. पल्सेस. ओके, पल्सेस भी प्लांट का कौन सा पार्ट है? सीड. ओके, पल्सेस भी प्लांट का कौन सा पार्ट है? दैट इज द सीड. एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन. ओके, एंड आर obtained from the seed of leguminous plant. Pulses are the rich source of protein and they are obtained from the leguminous plant. Leguminous means those plant to which having the pods, जिसको pods होते हैं, that plants are called leguminous plant. And common plant are pea, bean, soya bean, gram. Okay, so pulses means दाल. हम जो सब दाल खाते हैं, those are the pulses. एंड पल्सेस प्लांट का कौन से पार्ट से मिलते हैं? सीरल है, पल्सेस है, सीड. ओके, वी आर ऑब्टेन द सीरल पल्सेस फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? दैट इज द सीड. एंड हमें ऑयल मिलता है. ऑयल भी किससे मिलता है? सीड. देन हमें कॉफी मिलती है. कॉफी भी कौन सा है? सीड. ओके, देन वी आर ऑब्टेन द सम स्पाइसेस. ओके, जो मसाल्याचे पदार्थ म्हणतो आपण त्यांना कॉन्डिमेंट्स, दे आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स. ओके, देन नेक्स्ट वन, फ्रॉम द प्लांट्स वी आर ऑब्टेन वेजिटेबल्स. ओके, एक्चुअली दे आर द फ्रूट्स. प्लांट्स का कौन सा पार्ट है? फ्रूट है, बट वी आर यूजिंग एज अ वेजिटेबल. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंजल है, टोमेटो, लेडी फिंगर, सभी गार्ड, बॉटल गार्ड, स्नेक गार्ड, बीटर गार्ड. ओके, सो दे आर द वेजिटेबल्स. प्लांट के कौन से पार्ट है? प्लांट्स का पार्ट है, दैट इज द वेजिटेबल्स. ओके, then next one, tea is obtained from the leaves. Okay, and coffee is obtained from the seed. Okay, tea हमें leaves से मिलता है, then coffee हमें seed से मिलता है. We are using the different spices, मसाल्याचे पदार्थ. Okay, so we have no food value and are used for adding the flavor to the food. So spices is added in the food item to enhance its taste. Okay, to make it tasty, we are adding the spices. अब सब लोग मैगी खाते हैं. मैगी मसाला की पुड़ी आती है, उसमें मसाला का पाउच होता है. यस ना, बिना मसाला डाले आप मैगी खा सकते हैं. टेस्टी लगते हैं. नो ना, आप उसमें वो जो स्पाइसेस की मैगी के साथ में स्पाइसेस का पाउच मिलता है, वो आप ओपन करके ऐड करते हैं, देन मैगी टेस्टी होती है. यस ना, सो दिस स्पाइसेस, ओके, दिस स्पाइसेस मेक द फूड आइटम अवर टेस्टी. एंड ये जो स्पाइसेस है हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. ओके, स्पाइसेस हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. सो प्लांट्स के कौन से पार्ट हैं? सभी पार्ट से मिलते हैं. रूट से मिलते हैं, स्टेम से मिलते हैं, बार्क से मिलते हैं, लीव्स से मिलते हैं, फ्लावर से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं, सीड से मिलते हैं. सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से हमें स्पाइसेस मिलते हैं. And we are adding the spices to the food item for the flavoring, for increasing its taste. Okay, so cardamom, जिसको हम विलायची बोलते हैं, then ginger,
then turmeric, along with this black pepper है, clove है, saffron है, fennel है, cumin seed है, coriander है, black pepper है. Okay, like this, those are the spices. ये सब क्या हो गए? Spices हो गए. Even turmeric है. Okay, those are the spices, and this spices is obtained from the different part of the plants. ये जो spices है हमें plant के different parts से मिलते हैं. Okay, then next one, sprouts. Sprouted seeds, for example moong, then black gram, green gram, पी, चिकपी, बेंगल ग्राम. जब उसको स्प्राउट्स आते हैं, ओके, दे आर मोर न्यूट्रिशियस. एंड स्प्राउट कैन बी ईटन एज अ रॉ और एज अ सलाड, एज अ कुक. उसको हम बॉईल करके भी खाते हैं, रॉ भी खा सकते हैं. सो व्हेन द सीड इज जर्मिनेट, सीड स्मॉल स्मॉल वन जर्मिनेट होता है, that is called sprout. Okay, and sprout is nutritious. Sprout क्या है? More nutritious है. Next one, ये तो सभी हो गए food obtained from the plants. हमें animal से भी food मिलते हैं. Yes. Okay, animal also give the different type of food product such as milk, then meat, then egg, then honey. Those are the animal product. Okay, those food item we obtain from the animals. ये food item हमें animal से मिलता है. So milk, cow, buffalo, sheep, goat, camel, reindeer, they are called milk giving animal. And those animal which gives the milk, they are called milk animal. And milk से जो product form होते हैं, they are called dairy product. And milk is called complete food क्योंकि उसमें विटामिन भी है, मिनरल भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है. And milk is obtained from the animal source. Egg, egg is also animal source. Eggs are rich in protein and vitamin. Hen, duck, geese, quail, those animal which give the eggs. Okay, and जो animal eggs देते हैं उनको बोलते हैं, that is the poultry animal, egg giving animal. They are called poultry animal. देन एनिमल से हमें मीट भी मिलता है. फ्लैश ऑफ एनिमल इज कॉल्ड मीट, एंड वी गेट द मीट फ्रॉम द गोट, चिकन, शीप. ओके, इससे हमें मीट मिलता है. मीट इज रिच इन प्रोटीन, विटामिन, जिंक, फॉस्फोरस, आयरन. Then seafood, that is fish, crab, prawn. Okay, those are also animal. Animal, those are also obtained from the animal. Fish, prawn, crab gives us the meat. Okay, it is also animal product. Fish, okay, it is the second largest food item. Okay, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ओके, सो इट इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ईट द फूड एज अ फिश. Then next one, honey. Honey जो sweet liquid है, it is also obtained from the animal source. Honey bee है, honey bee क्या करते हैं? Sweet juice collect करते हैं. That sweet juice is called nectar. Different flowers से sweet juice collect करते हैं. That is called nectar, and then it is converted into honey. And honey having the medicinal property, and it is the natural sweetener. So those are the food item which we obtain from the animals. Then milk से जो product form होते हैं, they are called dairy product. So milk से हमें पनीर, cheese, cream, butter, curd, ghee, those are the milk product. And milk हमें animal से मिलता है. So paneer, it is also called cottage cheese.
Butter is made by churning the fresh cream. Okay, then cheese, then ghee, all are the milk product or dairy product. Okay, is it okay, dear students? Okay, so there are some questions to you for the practice. I'm sending this presentation to the group and you have to solve these questions and send their answer to the WhatsApp group. Okay, मैंने questions को number नहीं mention किए हैं, मैं number mention करती हूँ. Then I send you this presentation to our group. You have to solve these questions. Okay, नहीं तो मैं गूगल फॉर्म में आपको क्वेश्चन शेयर करती हूँ. You have to solve these questions. Okay, and send me your score. Okay, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है and आपका स्कोर मुझे शेयर करना है. So the food item which we eat, it is obtained from the two main source, that is the plant source and next one animal source. जो फूड आइटम हम खाते हैं हमें कौन से टू मेन सोर्स से मिलता है, दैट इज द प्लांट सोर्स एंड नेक्स्ट वन एनिमल सोर्स. ओके, एंड प्लांट्स के ऑल पार्ट से हमें फूड मिलता है. रूट से मिलता है, स्टेम से मिलता है, फ्लावर, लीव्स, फ्रूट, सीड. ओके, प्लांट के ऑल पार्ट से हमें फूड मिलता है. देन एनिमल से भी हमें मिल्क, एग, मीट, फिश, हनी, those are the animal products. Okay, so the main source of our food is plant source and next one animal source. Is it okay, my dear students? Do you understand today's topic? Okay, now you can call to your mother and father if they have any doubt regarding Homi Baba exam. Then I discuss with them. Okay, आपको आपके मम्मी पापा को कॉल करना है. उनको मम्मी पापा एग्जाम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कोई डाउट है, then I would like. Yes, okay, I would like to discuss with them. Okay, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. आपको आपके पेरेंट्स को कॉल करना है. हेलो, आप अनम्यूट कर सकते हो? देखो, एक बार करके देखो. एनीवन? चैतन्य पिंपळे, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. ओके, आपके पेरेंट है आपके साथ में? यस मैम. ओके, हेलो मॅडम. हॅलो. ओके, तुम्हाला होमी बाबा एक्झामची काही डिटेल इन्फॉर्मेशन हवी आहे? हो, माझा आवाज येतोय? हा येतोय ना. ओके, स्पेशली 6 स्टँडर्ड साठी असते होमी बाबा एक्झाम आणि 9 स्टँडर्ड साठी असते आणि 100 क्वेश्चन्स असतात आणि सगळे क्वेश्चन सायन्स सब्जेक्टचेच असतात. हं. आणि एक्झाम ऑक्टोबर महिन्यात असते. ऑक्टोबर मध्ये होते. ऑक्टोबर लास्ट वीक मध्ये एक्झाम आहे. संडेला. संडेला ऑक्टोबर मधल्या संडेला असते का मधल्या सॅटर्डेला असते? कारण त्यांना स्कूलचा स्टाफ लागतो ना एक्झामिनेशन ड्युटीला. संडेला बरोबर. जनरली टीचर्स कंटाळा करतात यायचं. हा, चालेल. ऑक्टोबर लास्ट वीक. हम्म. ऑक्टोबर लास्ट वीकला असते एक्झाम आणि मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत, जस्ट लाईक स्कॉलरशिप अँड नवोदय. स्कॉलरशिप नवोदयचे जसे एमसीक्यू क्वेश्चन्स आहेत, सेम तसेच एमसीक्यू क्वेश्चन्स असतात. आपला क्लास रोज असणार आहे का? नाही, सध्या तर मी 3 दिवस डेमो घेत आहे. हा, ते डेमो लेक्चर्स आहेत स्टुडंटसाठी. मग आम्हाला कंटिन्यू करायचं म्हटलं तर येस, मी लास्ट डे ला इन्फॉर्मेशन देते ना कंटिन्यू करायचं. चालेल चालेल. थँक्यू मॅडम. ओके, देन अगेन कांचन मॅम. ओके, ऑन युअर कॅमेरा. ऑन युअर कॅमेरा.
Is it okay, dear students and parents? ओके. कंचन, तुझ्या मम्मी पप्पांना काही डाऊट आहेत, काही विचारायचं आहे त्यांना एक्झामशी रिलेटेड? ओके, तुम्ही अनम्यूट करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, काही विचारायचं एक्झामशी रिलेटेड? नो टीचर. येस. No, teacher. Okay, so is it okay? Do you understand today's topic? Yes. Okay, all my dear students, bye. Bye. No, no negative marking, ma'am. You can on your camera, no problem. तुम्ही कॅमेरा ऑन करूनही बोलू शकतात, विचारू शकतात, काहीच प्रॉब्लेम नाही. निगेटिव्ह मार्किंग नसतं. अच्छा अच्छा, ठीक आहे. MCQ आहे, 100 मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत, 100 मार्क्स आहेत, 90 मिनिट्स मध्ये मुलांना सॉल्व्ह करायचे आहे. नियर अबाउट 60 to 70,000 ऍप्लिकेशन असतात, त्यातनं फक्त 7.5% सिलेक्ट करतात. नेक्स्ट राऊंड म्हणजे प्रॅक्टिकलसाठी. अच्छा अच्छा. म्हणजे सिलेक्ट केले त्यातनं पुन्हा 10% सिलेक्ट करतात. अच्छा अच्छा. आणि हे एक्झाम कुठे होते साधारण? डिस्ट्रिक्ट प्लेसला होते. तुम्ही कुठल्या सिटीत राहतात? मोस्टली सगळ्या डिस्ट्रिक्ट प्लेसला होते. इव्हन तालुका प्लेस आर ऑल्सो सेंटर. ऑफलाईन अच्छा. होते लास्ट वीक ऑफ ऑक्टोबरला. ह्या वर्षी त्यांनी ऍक्च्युली नोव्हेंबरला म्हटलंय, आफ्टर दिवाळी म्हटलंय. सेकंड वीक ऑफ नोव्हेंबरला एक्झाम राहणार. मोस्टली सॅटर्डेला असते. आणि डिस्ट्रिक्ट प्लेस किंवा काही तालुका प्लेस पण सेंटर आहे. आणि प्रॅक्टिकल एक्झाम जी म्हणताय तर त्याचे सब्जेक्ट ते देतात का आपण चूज करायचा असतो? प्रॅक्टिकलचे सेटअप ठेवलेले असतात. फिजिक्स, केमिस्ट्री. प्रोजेक्टला सब्जेक्ट असतो, प्रॅक्टिकलला सब्जेक्ट नसतो. हा, म्हणजे पण ते जे सांगतात ते त्यांच्याप्रमाणे असतं का आपणच सांगायचं? एक्सपेरिमेंट ठेवलेला असतो, तो एक्सपेरिमेंट स्टुडंटला करावा लागतो. इन्स्ट्रक्शन दिलेले असतात, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करावा लागतो, ऑब्झर्वेशन टेबल फिलअप करावा लागतो, खाली 2-3 क्वेश्चन्स असतात, त्याचे आन्सर्स लिहावे लागतात. अच्छा, म्हणजे 6 ला पण असतं हे? हो. अच्छा. प्रॅक्टिकलचं प्रिपरेशन आपण करून घेतो. मुलांकडनं जवळपास 80 एक्सपेरिमेंट मी करून घेते. पण मग प्रॅक्टिकल नेक्स्ट स्टेज आहे. थेअरी अच्छा. मधून ते ओनली 7.5% सिलेक्ट करतात. हा, मग जे सिलेक्ट होतात ते प्रॅक्टिकल जॉईन करतात. बरोबर. प्रॅक्टिकलचंही प्रिपरेशन करून घेते, प्रोजेक्टचं पण करून घेते, इंटरव्ह्यूचं पण करून घेते. जवळपास 2017 पासून फक्त होमी बाबाच क्लास घेते. अच्छा अच्छा. आणि याला बुक वगैरे काही आहे का फिक्स हो असं? हो, बुक्स आहेत. काही म्हणजे कळेल का त्याची माहिती हो आम्हाला? हो, मी कळवते ना ग्रुपवर. तुम्ही ग्रुपमध्ये आहातच ना? हो हो, येस चालेल. थँक्यू मॅडम. येस. ओके. So, is it okay, dear students? येस. Okay, bye.